तो वो जो पार्ट था वो इसीलिए हमने रोकवा दिया कि दैट इज द ओवेरियन साइकिल। वो किसका पार्ट है? ओवेरियन साइकिल का। नाउ वी कम ऑन द डिस्कशन ऑफ द इंडोमेट्रियल साइकिल एंड इट्स कोरिलेशन। इसके कोरिलेशन को और किसको देखेंगे? इंडोमेट्रियल साइकिल। एंड इंडोमेट्रियल साइकिल दैट इज द एज ऑफ changes in the uterus. Uterus is formed by the 3 layers: endometrium, myometrium and epimetrium. Epimetrium, endometrium and आपका जो इंडोमेट्रियम है यूटेरस 3 लेयर्स का बना हुआ है: इपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इपीमेट्रियम तो बाहर का लाइनिंग हो गया। Myometrium is most muscular structure to provide the physical support to the developing embryo. वो एक्चुअली क्या करता है, इसलिए बहुत वो मजबूत होता है, बल्कि होता है, मसल्स का होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। टू प्रोवाइड द फिजिकल सपोर्ट and the changes which is responsible for the formation of placenta and to provide the nutrition to the developing embryo is the endometrial wall. Why so? The endometrium is regularly changed. फिजिकल इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे, फिजिकल जो फीचर्स होंगे वो चेंज होगा एंड इट प्रोवाइड्स द बेड for the development or for the implantation of the developing embryo. Implantation means the formation of placenta. And on the basis of the chemical, because here the one part is the pituitary. Pituitary is responsible for the secretion of 2 major hormones, that is the FSH and LH. FSH from 1 to 14 days or LH from 14 to 22 or 24 days. Okay, that pituitary hormone is associated with the ovarian cycle, and ovary release the 2 hormones. In the FSH phase, it is responsible for the secretion of the estrogen, and in the LH phase, it is responsible for the secretion of the progesterone. Now, the estrogen and progesterone acts on the endometrial wall of the uterus, and in this way the cyclic change of the ovary is interrelated with the endometrial changes by the hormonal coordination among pituitary, ovary and endometrium or uterus. Now it is referred as the 2 phase. First, that is the follicular phase or estrogen phase. Follicular phase or estrogen phase. Follicular phase, that because it is responsible for the follicular stage of the follicular cycle. वहाँ पे follicular phase है. Now the follicular phase is also known as the estrogen phase, and it is responsible for the regenerative stage on the regenerative work on the endometrial wall, and from 2 mm thickness to it becomes the roughly 4 mm. And now in the second phase, that is referred as the luteal phase or progesterone phase. Luteal phase or progesterone phase, it is responsible for the synergic effect. That progesterone acts synergic effect on the endometrial wall. सिनर्जिक मतलब क्या होता है? सिनर्जी का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए 2 और 2 कितना हो गया? 4. बट इफ 2 और 2 हो जाए 8, तब ये क्या हो गया? इफेक्ट हो गया, वो सिनर्जिक हो गया। जैसे मान लीजिए कि 2 यूनिट ऑफ एनी केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 यूनिट ऑफ अनदर केमिकल। तो 2 किया, एंड व्हेन यू ऐड द 2 फर्दर यूनिट, तो उसको कितना होना चाहिए था? 4. बट दे प्रोड्यूस द नॉट 4, दे प्रोड्यूस द 8x प्रोडक्ट. देन the effect is referred as the synergic effect. And now the progesterone acts synergetically on the endometrial wall. Okay? And it becomes very spongy, thick and spongy, with complete
और tortuous supply of the blood vessels. यहाँ पे पूरा blood vessels एकदम पूरा कैपिलरीज जो होगा वो क्या होगा, उस पर ग्रो करते रहता है, फ्लो करते रहता है. एंड हियर इट इज ऑल्सो व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, नाउ आफ्टर द 26 days of the menstrual cycle, the level of the progesterone is decreased due to the recession of corpus luteum, and it provides a tortuous effect on the spongy or well developed endometrial wall, which is responsible for the scraping of the layer, That means when it becomes tortuous, it requires more and more nutrients and blood supply. But when एकदम ये क्या हुआ है, स्लाइट एकदम खत्म हो गया तो दैट सप्लाई ऑफ द अदर केमिकल्स इज ब्लॉक, सप्लाई क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, और जैसे ब्लॉक होगा इट बिकम्स स्क्रैप आउट, एंड नाउ इट इज रेफर्ड एज मेंस फेज, और ब्लीडिंग फेज और एनीथिंग एल्स. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. नाउ हियर just I represent a correlated structure, a pituitary, ovarian cycle and endometrial cycle. It is the pituitary. Clear? अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा. Now it is the 4th day that is ovulated, and that is the level of the FSH and LH. This part is the referred as the FSH part. This one is the referred as the LH part. And here the effect is the endometrial wall. That is the effect of the progesterone. That is the effect of the estrogen. Estrogen is more at the peak at the 14th layer. Again here the 26 days. Progesterone on the 26 days. And now it is decreased. Clear? This one is the 3 phase. Menstruation phase. Proliferative phase. Where it is proliferate. Secretory phase. It is, and that is the again menstrual phase. It becomes 1 to 28. Clear? कोई दिक्कत नहीं. Now all these three function of all these three are coordinated by chemical messengers. That is the hormone. And in this way it is referred as the menstrual cycle. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तभी भी दिक्कत है. नाउ अगेन इट रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स. It represents the feedback nature. That is because only 1 or 2 things. अगर आप पहले समझ गए तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है. One is the estrogen. When estrogen is produced more and more, it acts negatively on the FSH. And the level of the FSH is decreased. But when the follicle is converted into the corpus luteum, then the level of the estrogen is gradually decreased and level of the FSH is gradually increased, which comes at the same level at the first day or 26 days of the 26 days. I initiated again the follicular phase. Likely the progesterone act negatively on the LH. And then the LH is again works at the same nature, and at the 20 when it decreases, progesterone is decreased, the remaining residual layer is complete, comes at the lowest level at the 7th or 8th day, and now LH again initiated in the next cycle. In this way, by the work of the coordination of all these 3 structures are related by the positive or negative feedback mechanism. Feedback mechanism हम पहले पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना. And now here if we consider
the structure माने histological structure of the uterus, it is converted, हम बोले थे कि it is divided into the epimetrium, myometrium and endometrium. Now the layer is endometrium is divided into the stratum basale. Stratum basale means basal lamina. बेसल लेमना पढ़े हैं इपिथेलियम टिश्यू में? नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़े हैं? हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन, चलो रे कोटा वाला खड़ा हो। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? हाँ, भूल गए इतना जल्दी? ABCD नहीं भूले हैं? बढ़िया। बेसल लेमिना इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसका नाम है बेसल मेम्ब्रेन। एंड समटाइम आस्क इन द क्वेश्चंस, आपके नीट में भी पूछे हुए हैं, नेट में भी पूछे हुए हैं। इट इज द फाइबरस प्रोटीन, कोलेजिन फाइबर्स एंड सीमेंटिंग मटेरियल। इसमें क्या होता है? कोलेजिन फाइबर्स होते हैं और सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता, उसमें लेमना प्रोपेरिया और लेमना ग्रेनुलोसा दो पार्ट हो जाता है वहाँ पे। लेमना प्रोपेरिया दैट इज द फाइबरस स्ट्रक्चर and lemna granulosa, and both collectively form the क्या बोले? basal membrane, and it is present in all epithelial tissue. जहाँ भी epithelial tissue आप पढ़ रहे होइएगा वहाँ पे सबसे नीचे क्या मिलता है? basal lamina, and this one is the stratum basale. इसलिए हम आपको समझा दिए थोड़ा सा। That is the stratum basale, and on this part two parts is represented, that is the stratum spongiosum and stratum compactum. Stratum spongiosum कब मिलेगा? proliferative phase में। कहाँ मिलेगा? proliferative phase में। stratum spongiosum is increased generally in the size, and in the secretory phase or progesterone phase it becomes highly developed. कौन सा? stratum spongiosum, and it provides the base for the formation of the placenta. ठीक है? Clear? And now the stratum compactum is the outer lining. Outer जो epithelium lining है उसको हम क्या बोल रहे हैं? stratum compactum. Why so? In the menstrual phase or in the early of the proliferative phase or follicular phase, only stratum compactum is present. Clear? कोई दिक्कत नहीं? ये है दिक्कत? अब बोलेगा ही नहीं। Now thanks, or it is also important for your examination, that is menstrual cycle.